Dear students, after a long gap, I welcome you back to the channel DM classes. I have already discussed the three important poems prescribed for the secondary students, and today I intend to discuss with you a very interesting story written by Rasipuram Krishnaswamy Narayan Swami Iyer, R.K. Narayan Iyer. Okay, and you can very well guess the title of the story, that is The Doctor's Ward. Okay, and it is a very interesting and arresting story. Why? Because as you know, Mr. R.K. Narayan had the ability to create an imaginary town, a fictional town called Malgudi, and in that fictional town you can find the features just like the Tahsil office, you can find the police station, you can find the club, college, as you find in a physical town. Okay, and in this story, the Doctor's Ward. What is the meaning of Doctor's Ward? डॉक्टरंकर प्रतिश्रुति बा जवाब इन ओडिया, द कमिटमेंट, द प्रोमिस, द वर्ड of a doctor. Okay, now in this story we will discuss about Dr. Raman. Okay, and when we fall ill we consult a doctor to get cured. आमको जो कौन रोग हुए आम जड़े डॉक्टर पाखु जाती परामर्श नियंती, एंड व्हाट एवर ही प्रेस्क्राइब्स टू अस वी टेक द मेडिसिन, एंड समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द मेडिसिन्स, द एडवाइस, द स्माइल, द जेस्चर ऑफ ए डॉक्टर, द एटीट्यूड ऑफ ए डॉक्टर हेल्प्स अस गेट क्योर. अधिकांश समय डॉक्टर मेडिसिन आमको जी आरोग्य हाँपाई साहाय्य करे, डॉक्टर आम प्रति जो परामर्श, आमर डॉक्टर उपर जो विश्वास भरोसा, तांकर हस हस मुह, तांकर कॉन्फिडेंस, तांकर प्रोमिस, तांकर गुड विशेष आमको साहाय्य करिया माने आरोग्य हाँपाई साहाय्य करे. एंड इन दिस स्टोरी लेट अस एग्जामिन हाउ फॉर द वर्ड्स ऑफ Dr. Raman helped his best friend get cured. ये स्टोरी आम देखा डॉक्टर रमन तांकर जो प्रतिश्रुति, तांकर जो जवाब रोगी मान को केमिति आरोग्य हबारे साहाय्य करुथिला, एवं सर्वशेष विशेषकर तांकर जो एलिंग फ्रेंड जे रही गोपाल ताकू आरोग्य हाँपाई केमिति साहाय्य करिछि. Now let us begin the story, Doctor's Ward. Now in the first unit, first of all, the storyteller tells us about the qualities of Dr. Raman. What type of doctor he was, whether he was reliable, whether he was experienced, whether he was sweet-worded, sweet-quoted, he was using pleasant words, soothing words or not. डॉक्टर रमन केमितिया डॉक्टर थिले, अन्य डॉक्टर भाया थिले ना किसी देयर वाज एनी डिफरेंस इन हिम, हार्ड ही एनी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्वालिटीज, ताकर किसी विशेषत्व थिला कि. डॉक्टर रमन वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, ए रेप्यूटेड डॉक्टर, फेमस डॉक्टर ऑफ द लोकालिटी मालगुड़ी. नाउ बट despite his experience, despite his popularity, very rarely patients came to him. Why? सी जड़े सुनामधन्य जड़े अभिज्ञ डॉक्टर, तथापि तांका पाखक पेसेंट माने आसियापाई टिके संकोच प्रकाश करती, दुविधा प्रकाश करती, दे हेजिटेट. व्हाई? देयर आर टू रीजन्स. नंबर वन, his consultation fee was a bit higher.
he was demanding 25 rupees as his consultation fees. Nowadays, if you are visiting a super specialist doctor, you have to pay consultation fees about 600, 800 or 1000 rupees. But in the long past, the visiting consultation fees of a doctor was 10, 15, 20. But Dr. Raman demanded 25 rupees. Because his charges was more. Therefore, some poor patients hesitated to come to him. से समय डॉक्टर मान 25 टका चार्ज करुले अधिकांश लोक सस्ता डॉक्टर मान पाखु जाउथिले जोटी कि फीस टे कम. नंबर 2, people came to the door of Dr. Raman only when they were at their last stage. The patient was at the last stage, because the chief doctors, those who are demanding less charges, they were unable most of the times to save the life of the patient. अधिकांश सस्ता डॉक्टर जो कि कम पैसा नियंती अधिकांश समय से माने रोगी को माने तार रोग भल करिवारे विफल होती. आउ जेतेबेले से माने पूरा पूरी देखती रोगी बंचीब नाही, से समय से माने रोगी को डॉक्टर रमन पाखु आनती. एंड when someone comes to Dr. Raman, either he is or is capable of paying 25 rupees, or he or she is on the verge of death. तामाने रोगी जो डॉक्टर रमन पाखु आसती से माने आइदर पैसा वाला होइथिबे, पैसा 25 टका दे पारुथिबे, किंबा से माने मरिबा आसन्न थिबो, तांकर मृत्यु आसन्न थिबो. And whenever a patient came to him, he never used any sweet quoted words. कौन सी पेसेंट तांका पाखु आसिले केबे हेले से मधुरिया कथा, व्हाइट वाशिंग कथा व्यवहार करती ना. कहीं ना ही न्यू वेरी वेल फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट यूजिंग स्वीट quoted words never saved the life of a patient. मधुरिया कथा कहले कौन सी सत्य को लुचई देले कौन सी रोगी भल हो पारे ना. एणु हिज वर्ड्स वे आर जस्ट लाइक द verdict of his judge. तांकर कथा केमिति क्या, तांकर कथा थिला सते जेमिति जणे विचारालयर विचारपतिर विचार भलिया, तार जजमेंट भलिया. व्हाट एवर ही सेड दैट वाज फाइनल. एंड इफ ही सेड the patient will survive, even the god of death Yama cannot take away the soul of their patient. जदि से कहते जे रोगीटी बंचीब तामाने जम चाहिए मृत्युर देवता चाहिए से रोगीर आत्मा को नहीं पार नथिला, अर्थात से रोगी मर नथिला. एंड इफ ही सेड द पेशेंट विल डाई, नो अदर डॉक्टर, नो अदर ट्रीटमेंट could cure him or her. जदि से कहते रोगी बंचबनी ताने अन्य कौन सी डॉक्टर कौन प्रकार ट्रीटमेंट कौन प्रकार मेडिसिन से रोगी को केबे हेले भल करि पारु नथिला. एंड दिस वाज द वर्ड ऑफ डॉक्टर रमन. नाउ यू सी डॉक्टर रमन नेवर यूज्ड स्वीट वर्ड्स, प्लीजेंट वर्ड्स, प्लीजिंग वर्ड्स टू soothe, टू प्लीज, टू satisfy द अटेंडेंट ऑफ ए पेशेंट. कौन सी रोगी रो जो मैंने आत्मीय जे कि रोगी को आनी था रोगी संगे आसती ताकू केबे से मधुरिया कथा कहती नहीं. हाँ मु तुम रोगी भल करदेवी, मो पर विश्वास कर, भरोसा कर, एमि से केबे कहती ना. देख समटाइम्स वी आर nonplussed, we are undone against our decision, against our promise, against ourselves. We have to tell some lies. बेले बेले एमिति परिस्थिति सृष्टि हुए आमको आमर इच्छा विरुद्ध रे, आमर निष्पत्ति विरुद्ध रे, आमर प्रतिज्ञा विरुद्ध रे, आमर चरित्र विरुद्ध रे किछि कथा कहिया को पड़े.
For example, you see your Dharmaraj Yudhishthira had to say नरवा गुंजर हेउ अश्वत्थमा हत से जानी अश्वत्थमा जे कि गुरुपुत्र से मरी नाहंती किंतु बिकॉज ऑफ द डिमांडिंग सिचुएशन से कौन कहले नरवा गुंजर हेउ अश्वत्थमा हत अश्वत्थमा से मनीष हो किंबा हाथी हो मरी से जानी हाथी अश्वत्थमा मरी किंतु मनीष अश्वत्थमा मरी ना तेणु आम जो सेकेंड यूनिट देखा व्हाट कंपेल्ड व्हाट डेड डॉक्टर रमन टू टेल ए लाई ओके नाउ यू सी इट वाज ए बिजी डे इट वाज एन ऑपरेशन डे डॉक्टर रमन because of his experience because of his success in operation could not know that the son of his friend Gopal was waiting for him in the consultation room sitting all alone on a bench. साधारणतः जो दिन बेसी ऑपरेशन थाए सर्जन माने बेसी व्यस्त था टाइम हुए ना तेणु यह गोटे व्यस्तबहुल दिन डॉक्टर रमन कंसल्टिंग पेशेंट्स माने प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन्स एंड ही इज ऑल्सो कंडक्टिंग ऑपरेशंस तेणु यही समय से देखिले बेंच उपरे एकांतरे तांकर अति घनिष्ठ बंधु गोपाल पुओ बसी एंड यू सी व्हेन ही सॉ Gopal's son, the name of Gopal, his best friend came to his memory. He recalled seeing the son of Gopal that for as many as 3 months Gopal had not come to his clinic. दीर्घ 3 मास है मन पकड़े 3 मास है तांकर सांग गोपाल तांको क्लिनिक की आसी नाही यू सी व्हेनेवर गोपाल फाउंड टाइम डॉक्टर रमन वाज ऑलवेज बिजी व्हेनेवर गोपाल फाउंड टाइम ही विजिटेड द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर रमन वेटेड साइलेंटली व्हेन डॉक्टर रमन वाज फ्री बोथ फॉर देम went outside sometimes they visited a film sometimes they dined together outside and they talked about several matters concerning to their personal life तेणु डॉक्टर रमन को केवे समय हुए ना जिते गोपाल को समय हुए से कौन करे डॉक्टर रमन को क्लिनिक आसे रमन को पाखे बसे चुपचाप विदाउट डिस्टर्बिंग हिम जिते डॉक्टर रमन फ्री हुंती बेले बेले से मिसिकी सांग बाहर होटेल खाई दिखती बेले बेले से सिनेमा जाती और से व्यक्तिगत जीवन विषय से आलोचना करती ओके नाउ the friendship between Dr. Raman and Gopal was a unique one, a classic one. It is incomparable and it started from their kindergarten days and continued for more than 40 years. You see, friendship continuing for more than 40 years undisturbed. दीर्घ 40 वर्ष ऊर्ध्व बयस है गोपाल और डॉक्टर रमन भितर बंधुता सेमती पूर्ववत अमलिन रही प्रभावित है नहीं द मॉडर्न मेटलिस्ट वर्ल्ड वर्तमान जो आधुनिक वस्तुवादी दुनिया जोटि कि रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक ए बाटर सिस्टम गिव एंड टेक सिस्टम आजिकल ये जो पार्थिव वस्तुवादी दुनिया रे जोटि कि सबू संपर्क केवल देणनेण उपरे निर्भर करे एभलिया जुगरे सेमानकर संपर्क दीर्घ 40 वर्ष ऊर्ध्व है तिष्ठि रही बंधुता केजी क्लास रू किंडरगार्टन स्कूल आरंभ होईची आउ ए पर्यंत कंटिन्यू करुची इज ए क्लासिक फ्रेंडशिप अनअफेक्टेड अनटच बाय एनी सिचुएशन एनी सर्कमस्टांस कौन सी परिस्थिति से बंधुता को प्रभावित करी नहीं एंड आफ्टर 3 months
Dr. Raman got to know that his best friend in the world is ill, and his illness is communicated to him, appraised to him after 3 months of suffering. तांकर जे परम मित्र परम बंधु से 3 मास है शज्या सही 3 मास पर खबर पाऊँ जे सांग असुस्थ. And he asked Gopal son, what brought you here, sir? Son of Gopal said, mother has sent me here. Why? Father is ill. ताने श्री डॉक्टर रमन भावुंट तांकर से पुराणा बंधु विषय पचारे महाशय आप ये कहीं आसना माँ पठे कहीं ना बापा असुस्थ. ओके, आई विल visit your house after the operation. Okay, you see, mark the nature, the character of Dr. Raman. He got to know that his friend was ill. Unlike other doctors, those who neglect the patient in present but hurry to the houses of powerful persons, rich persons, those who can cause harm, pay more to the doctor. आजकल देखिए डॉक्टर मैंने कौन करती जदि कौन पावरफुल लोक खबर पठला सांगे सांगे अन्य पेसेंट को छाड़ देके सी प्रभावशाली लोक घर पड़े बादी कौन गोटे गरीब पेसेंट अच्छी छाड़ी गोटे धनी पेसेंट को अटेंड करने पड़े. मार्क द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर रमन एंड द प्रेजेंट डे डॉक्टर्स. डॉक्टर रमन कहले ऑपरेशन सरला तुम घर को मुझे. यू सी at about 3 p.m. come to the third unit. I am discussing the story in detail so that it will be helpful to you, because you will have to appear multiple choice questions, my friends. Okay, and if my teaching is appealing to you and if you like my teaching, please subscribe to my channel DM classes, and you will get lessons on prose, story, poem, grammar, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो मान को मोर शिक्षा प्रणाली भल लगुच दयाकोरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहाँद्वारा कि ग्रामार, स्टोरी, पोएम, प्रोज सबकि पाइपर. सेकेंड पिला माने फास्ट पिला माने संडे मु अपलोड करुँची, सेकेंड बुधवार दिन. ओके, नाउ डॉक्टर रमन रीच द हाउस ऑफ गोपाल at about 3, and immediately he entered into the room where his friend Gopal was lying senseless, unconscious. सांगे सांगे डॉक्टर रमन जो रूम रे तांकर बंधु गोपाल पूरा अचेत अवस्था पड़ी से रूम गले एंड एनक्वायर्ड फ्रॉम गोपाल्स वाइफ अबाउट गोपाल फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन इल. मोर देन 1.5 months. A doctor is coming to give him medicine every 3 days. प्रति 3 दिन जड़े डॉक्टर आसिक मेडिसिन दे जाऊँगी. ही हैज बीन इल फॉर मोर देन 1.5 months. 1.5 मास है, 1.5 मास अधिक समय है जड़े डॉक्टर आसी ट्रीटमेंट करुच्छे. एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर was not known to Dr. Raman, although he was living in the same lowly extension road. And you see, Dr. Raman found his friend unconscious, and without wasting time, Dr. Raman started treatment of his friend. काल विलंब नक समय नष्ट नक डॉक्टर रमन कौन कले देखले सांग अचेत हो रही, तेणु ट्रीटमेंट आरंभ करे. यू सी नाउ डेज वी आर यूज एंड थ्रो स्टेराइल निडल्स एंड सिरिंजेस. आजिकल आम सब कि 5 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା दे गोटे सिरिंज कि दौरान निडल अच्छी यूज एंड थ्रो थे यूज कले फिंगिदे. गो बैक टू द लॉन्ग पास्ट व्हेन द सेम निडल सेम सिरिंज वाज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर स्टेरिलाइजिंग द निडल इन बॉइलिंग वाटर. आगुरी गोटे सिरिंज बारंबार व्यवहार कराला, पानी गरम करी पानी रे फुटेकी स्टेरिलाइज कर व्यवहार कराला. नाउ डॉक्टर रमन इज यूजिंग द सेम ओल्ड सिरिंज, स्टेरिलाइजिंग इट इन बॉइलिंग वाटर. एंड यू सी आफ्टर स्टेरिलाइजिंग द needle
and the syringe. Dr. Raman gave an injection to Gopal and sat beside him by the side of his friend's bed, watching whether there was any impact and effect of the medicine. Dr. Raman injection फोड़ी देले देखि अपेक्षा करुचंदी काले सांगर किछि परिवर्तन आसीबो and you see it was more than 3 p.m. he had skipped his lunch. बर्तमान 3टा पर ही गलानी डॉक्टर रमन तांगर मध्याह्न भोजन खाई नांती and he was quite exhausted and drops of sweat rolling down from his forehead. He was quite famished, quite fatigued. डॉक्टर रमन पूरापूरी क्लांत पूरापूरी क्षुधार्थ मुंडरू पूरा झाड़ गम गम होकर बाहरुची आउ he was feeling drowsy, he was dozing, आखिपता पड़ी जाऊँची as if he was going to sleep. And observing this, Gopal's wife said, "Sir, shall I prepare a cup of coffee for you?" मासे आपण मैं गोटे कॉफी कपटे कर देबी कि? No, thanks, दरकार नहीं. Now, when Dr. Raman found his friend unconscious, he said, "I am coming within half an hour. I am coming within half an hour." And immediately he took his bag, entered into his car and rushed to his clinic, and within quarter of an hour, Dr. Raman returned back accompanied by a nurse and an assistant. And he said to Gopal's wife, "I have to perform an operation." You see, most often we find the women folk, they become rattled, they become excited, they become over anxious. साधारणतः कौन गोटे परिस्थिति आम देखा पुरुष लोक मैंने जी छानिया न होती जी अधैर्य न होती स्त्री लोक मैंने अधिक अधैर्य हो जाती. डॉक्टर रमन कहले जे गोपाल गोटे ऑपरेशन करिया पड़िबो. यू सी 3 मास है गोपाल असुस्थ अच्छी गोटे डॉक्टर प्रति 3 दिन थरे आसुचंती, बट ही नेभर सेड दैट ऑपरेशन इज नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ गोपाल. 3 मास है से डॉक्टर तो किसी परामर्श दौनी जे नहीं जा गोटे ऑपरेशन कर फॉर बेटरमेंट फॉर बेटर ट्रिटमेंट. किंतु डॉक्टर रमन आसु आसु साइंस कहले ऑपरेशन इज इनएविटेबल. गोपाल वाइफ कौन कहूँ व्हाई व्हाई व्हाई. She is totally nervous, and Dr. Raman said, "I will tell you later." And she was about to faint, fall down, collapse, and the nurse took him out. So, up to this point, we got to know the nature of initial treatment of Dr. Raman, and from this analysis, you can be clear what type of Dr. Raman was. Dr. Raman केमतिया डॉक्टर थिले, whether he was very prompt, very efficient, whether he wanted somebody's advice in treating the patient, serious patient or not. तेणु डॉक्टर रमन को भाया डॉक्टर तांकर अभिज्ञता अच्छी ना नहीं किंबा से अन्य कौन डॉक्टर साहाय्य सहयोग परामर्श नौकरी आम एथरू जापर. And again we also got to know about the type of friendship between Dr. Raman and Gopal. तांको भितर बंधुता केते थिला से विषय में जानले. And again we also know about Dr. Raman, about his fees, about the type of patient who hurried to his clinic. Okay, thank you very much. I will discuss the remaining 3 units in the next episode. Thank you. Bye.